Hi, my name is Abdul Basit, and I am a film director and an editor here at Last Mile Films in Islamabad, Pakistan. And today the film that we are going to review is one of Pakistan's most iconic and one of the biggest blockbuster films, and that is Khuda Kay Liye by Shoaib Mansoor. This is not exactly one of those film reviews जो usually आप शायद देखते होंगे. It has a bit of a different spin to it just because of this reason. It's more of my reflection to my experience watching Khuda Kay Liye back when I was 17 and now in 2024. And thus, the title is Khuda Kay Liye in 2024. So, इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली सबसे पहले तो कि हाउ द फिल्म इज़ रेलिवेंट टुडे एज वेल. बैक इन 2007 तब क्या हालात थे, स्पेशली इन द सर्कमफेरेंस ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान एंड माई ओन जर्नी एज अ टीनेजर एंड ग्रोइंग अप. What I felt, the message of the film, that is very important. It has touched so many different areas of our societies and our cultures and our religions complexities, जिसके ऊपर हम शायद आज भी बात करने में थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा डरेंगे. Especially like they talked about namaz, they talked about beard, they talked about women's right to marriage and even divorce, and they talked about jihad and how Muslims view the perspective of jihad and how non-Muslims view it. और फिर उसका जो पूरा कैनवस है इन्होंने पाकिस्तान एंड यूएसए स्पेशली और थोड़ा सा वो लंदन की साइड से स्टोरी को भी खींचा है. तो वो पूरा कैनवस इन्होंने इसके ऊपर बिल्ड किया. एंड इस स्टोरी के अंदर ख़ास तौर से जो चेंजेस आई हैं हमारे मुल्क के अंदर और मुसलमानों की पूरी दुनिया में पोस्ट 9/11 उसके ऊपर कमेंट्री की है मेनली. एंड एज़ फार एज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एक कच्ची सोच थी उस वक्त, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों की. We were really disturbed, like I was really disturbed with what was going on around. And when I watched that film at that time, जो इस्लाम के ऊपर बातें छेड़ी गई उनकी भी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी. जैसे कि मैंने बात की कि बियर्ड के ऊपर उन्होंने टॉपिक टच किया, तो दैट वाज माय एग्जैक्ट एज जहाँ पे एक ये माइंड शिफ्ट चल रहा होता है कि यार वो दाढ़ी रखनी है, क्या करना है, किस तरह से, लाइक देयर इज दिस लॉट ऑफ अनक्लैरिटी एज वेल. So for the first, I felt that someone is talking to me through this film. ये बड़ा connecting factor था मेरे लिए. कई ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी से कही नहीं या question भी नहीं आया, सिर्फ observation थी. तो इस फिल्म के थ्रू वो एटलीस्ट मेरे अंदर सवाल वो जागा. तो उस लिहाज से इस फिल्म, like it has served a lot. This film has served a lot in that sense. कि मेरी तरह और कितने यंगस्टर्स होंगे उस टाइम पे बैक इन 2007 जिनके जहन में ये सवाल आए होंगे. तो एक सवाल आना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड इफ़ आई टॉक फ्रॉम द फिल्म मेकर्स परस्पेक्टिव, ये एक बहुत बड़ी विन है उसके लिए. एज फार एज द स्टोरी टेलिंग इज़ कंसर्न, आई थिंक इट्स सुपर इंटेलिजेंटली डन. क्योंकि जिस तरह से कहानी को डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, डिफरेंट सिचुएशंस थी कि एक शान शाहिद और फवाद खान एज ब्रदर्स दिखाए, म्यूजिशियंस वो कैटेगरी दिखाई. एंड देन अनदर द मौलाना सेटिंग, उसके अंदर मौलाना का जो रोल जिस तरह दिखाया, द वन हु प्लेड अ पिवटल रोल इन मैनिपुलेटिंग मे बी from one perspective throughout the film. This is what we were given as a viewer, that he is just riding on the emotions of Fawad Khan, the character in the film. He was playing of a young musician, and I could relate the most with Fawad Khan's character because I was playing music at that time in my age as well, and I too did have questions related to music's eligibility in the religion, and I just couldn't find the answers. And this film, for the first time, maybe provided me some argument to present, or at least give me a certain direction to do my own research and get into that rabbit hole ke what is the role of
music in our religion, or what's his space basically. So all of these sensitive topics, I mean, I cannot stress enough how much of an impact the film had on me growing up. And even now when I think about everything after so many years, after literally 17 years, what I see is that we're still struggling from the same questions. We still don't have answers to most of them. And if I look at the situation of Pakistan, post 9/11, it was fresh, like it was just, I think, 6 years down the lane by the time this film came out. And one could think really that, अभी 6 साल हुए हैं तो बेहतर हो जाएगा, कुछ अरसे में ठीक हो जाएंगे हालात एंड एवरीथिंग. But when I watched the film now, and I was like speechless that it's been almost 17 years now since the film's release. And in total, it's been 23 or 24 years. And yet things have not changed much. We as Pakistan, we as Pakistanis, we're still facing almost all of the same problems. We're still struggling. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहीं खड़े हैं. मुझे ऐसा लग रहा था फिल्म देख के मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया शायद, लेकिन मेरे मुल्क ने, मेरे हालात ने, मेरे जज्बात ने, मेरे सवालात ने अभी तक सफ़र शुरू ही नहीं किया. So I felt this film is still relevant in 2024. And I fear to say that, and I don't want to say that, but it might be relevant even 17 years later. यही हालात रहे तो और 17 साल गुजर जाएंगे, और ये भी 17 साल बाद फिर मैं ये फिल्म देखूं तो मैं कहूँ यार अभी भी शायद वहीं खड़े हैं. That would really break my heart. So concluding on this side of my reflection to this film growing up and its relevancy in 2024, I think it's super relevant still. Everyone should watch it again and reflect back on how it made them feel back then and now. And जिन्होंने नहीं देखी, I highly recommend कि भाई ज़रूर देखें खुदा के लिए film. It is a masterpiece and it is still a relevant commentary on our society, on our religion. And I think इस तरह से और awareness create होनी चाहिए इस topic के ऊपर, और सबको इसके ऊपर और काम करना चाहिए through films or documentaries or even music or anything else.